मान मुख मंत्री पंजाब सरकार जी नूं देणगे। सारे ही आपो अपने स्थान ते बैठ सकते ने। अज दा दिन साडे सारियां दे लई ही मुकद्दस घड़ी है, कर्मां वाला दिन है, जदों कि कुल दुनिया दी लोकाई दे अपना एक सुनेहा देण वाला सर्ब सांचीवालता दा अजिहा एक बाबा नानक जदों प्रगटिया सी ते लिखिया जांदा कि मिट धुंध जग चानण होया। इस दिन दे उपर मुख मंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम इस मंच तो शुरुआत की जानी है। मैं बहुत ही सत्कार दे नाल मंच ते सद्दा दे रही हूं सरदार लालजीत सिंह भुल्लर जी, कैबिनेट ट्रांसपोर्ट मंत्री पंजाब सरकार, मंच ते आके तुहाडे सब दे रूबरू होणगे। सरदार लालजीत सिंह भुल्लर जी, कैबिनेट मंत्री। दीन दुनिया दे मालक धन धन श्री गुरु नानक देव जी दे अवतार पुरब दे मौके स्टेज ते विराजमान मेरे बहुत ही हरमन प्यारे हर दिल अजीज नैशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी, साडे बहुत ही हरमन प्यारे मुख मंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी, नौजवानों के दिलों की धड़कन नौजवान नेता राज सभा मैंबर श्री राघव चड्डा जी, बहुत ही सूझवान राज सभा मैंबर डॉक्टर संदीप पाठक जी, साडे सारे कैबिनेट मंत्री साहबान, MLA साहबान, चेयरमैन साहबान ते आम आदमी पार्टी दे वक्-वक् पिंडां तो आए साडे वर्कर साहबान, लीडर साहबान, आओ विचारां दी सांझ पाउण तो पहला गुरु फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज साडे हरमन प्यारे लीडर नैशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी, मुख मंत्री दिल्ली ते साडे हरमन प्यारे मुख मंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी, मुख मंत्री तीर्थ यात्रा लई जिहड़ी रेल गड्डी रवाना करन लई झंडी देण लई अज धूरी दी धरती ते आया ते एक छोटे जे सद्दे ते इस जन सलाब तो पता लगदा है पैर धरन नूं जगह नहीं, एडा वड्डा इकट्ठ हो जांदा जदों साडे मुख मंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी ते सरदार भगवंत सिंह मान जी मुख मंत्री पंजाब, लोकां नूं पता लगदा कि किते भी इन्हां दा प्रोग्राम आ एक छोटे जे सद्दे ते वड्डा जन सलाब आ जांदा। ते अज धूरी दी धरती ते आपां नूं पता लगदा कि पैर धरन नूं जगह नहीं हैगी। ते आपां पिछलियां सरकारां दे विच वेखदे रहे जदों सरकार बन जानी ते जदों इन्हां रैलियां वड्डियां करन लई वड्डे वड्डे इकट्ठ करन लई जोर लाउणा, सारी सरकारी मशीनरी सरकारी तंत्र ला देना ते इन्हां दे छोटे छोटे इकट्ठ होने, लोकां ने आउण तो इनकार कर देना। ते अज एक कोई साडी पोलीटिकल रैली नहीं, ये ते जिहड़े साडे भैण भरा तीर्थ यात्रावां ते जाना चाहुंदे आ, साडे बजुर्ग जिहड़े कोई साधन नहीं पैदा कर सकते जां पैसे की घाट है किसी नूं, उन्हां लई मुख मंत्री साहब ने श्री अरविंद केजरीवाल जी ने पहला दिल्ली तो मुख मंत्री यात्रा स्कीम तोरी ते उस तरह ही पंजाब तो साडे हरमन प्यारे लीडर मुख मंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी ने अज शुरुआत की आ। ते पहली बार होया कि AC ट्रेनां ते AC बसां दे उत्ते ते अगे जिहड़े AC रहन कमरियां दे विच रहन दा खाण पीण दा इंतजाम किया पंजाब दी जनता दे लई। ये पहली बार होया कि किसी सरकार ने एडा वधिया इंतजाम किया। ते वीरो ये तां ही तुसीं जे सहूलतां पंजाब दे विच जिहड़ियां गारंटियां दित्तियां वो आ रहीआं ते जे सहूलतां मिल रहीआं, मुख मंत्री तीर्थ यात्रा शुरू हो रही है, तुहाडी अपनी सरकार बनी आ, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तां ही संभव हो सकिया। नहीं तो पहलियां सरकारां दे विच जिहड़ा इलैक्शन वाला साल हुंदा ही, लास्ट ईयर हुंदा ही, इस तरह के लुभावने सुपने विखा के वोटां लैण दी कोशिश की जानी। पर आम आदमी पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल सरदार भगवंत सिंह मान वोटां की राजनीति नहीं करते, वो लोकां नूं प्यार करदे ते लोकां दे प्यार का सबूत यह जिहड़ा वड्डा जन सलाब इत्थे आया। ते साध संगत एक मैं गल होर दस दियां, जिवें 2022 दे विच वड्डे मार्जन नाल 92 MLA पंजाब दे लोकां ने जिता के सरकार बनाई, ये जिहड़ी हनेरी आई आ
ਇਹ ਕਿਤੇ 20 30 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕई लोग कोशिश ये करते हैं कि शायद बीजेपी दे विच चले जावांगे ते बीजेपी पंजाब च नवीं पार्टी आ ते शायद बीजेपी की गल बन जाएगी। पर वीरो ये सिर्फ सुपने ही हुंदे आ। जो काम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली दे विच कीते आ, जो काम आम आदमी पार्टी पंजाब दे विच कर रही आ, सरदार भगवंत सिंह मान, श्री अरविंद केजरीवाल जी लोकां दी सेवा कर रहे आ। ये काम बीजेपी 10 वार जन्म लैके भी इन्हां दे लीडर नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ इन्हां ने भारत की राजनीति दे विच कीता, डिक्टेटरशिप लैके आंदी आ, लोकां नाल धक्केशाहियां, परचे, नजायज कब्जे कराए जांदे आ। भावें अकाली दल की सरकार पंजाब च रही, कांग्रेस की सरकार पंजाब च रही, ते भावें भारत दे विच बीजेपी की सरकार बनी आ। जे सुनवाई हुंदी आ वो आम आदमी पार्टी की सरकार करके पंजाब दे विच सुनवाई होण लगी आ। नहीं ते आपां पंजाब दे विच वेखदे रहे आ सिस्टम ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਹ ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਤੇ ਬੱਤਰ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਨੇਤਾ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲकुल ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ लगता, लेकिन ला एंड आर्डर की स्थिति, हर तरह की स्थिति जी कंट्रोल दे विच आ। मुख मंत्री साहब हर काम ते आपकी निगाह बना के बैठे आ। ईमानदार सरकार आ, ला एंड आर्डर वधिया आ, करप्शन रहत लोकां नूं काम मिल रहे आ। मैं ज़्यादा समा ना लैंदा आ, क्योंकि मेरे तो बाद साडे महबूब नेतावां जिन्हां नूं तुसीं बड़े शौक नाल सुन लई इत्थे आए जे, श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, सरदार भगवंत सिंह मान जी ने तुहाडे रूबरू होना। मैं इन्नियां ही बेनतियां करदा खिमा दा जाचक हां। जे कोई अखर वाधा घाटा गलत बोलिया गया तो माफ करना। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हुण जिस लिए आपां सारे इकट्ठे होए सी, उस वाहिगुरू दा ओट आसरा लैके, उसे दा नाम लैके अज जिहड़ी तीर्थ यात्रा, मुख मंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम है उसका उद्घाटन करन चले आ। मैं एक गल जरूर कहांगी, साडे दोनों मुख मंत्री साहबान बैठे ने कि सर मैं सवेरे आई हुई हाँ, बहुत सारे परिवार मैनू मिले ने जिन्हां ने इत्थे मंच ते खड़ के इस गल दा हुंगारा भरिया कि समाजिक सरोकार, आर्थिक सरोकारता तुसीं गल कर दित्ती, बिजली दे बिल माफ कर दिते, समाजिक स्कीमां ले आए। अज जिहड़ा उन्हां दे मन दे वलवले सी धार्मिक स्कीमां दे कि आपो अपने तीर्थ स्थानां दी यात्रा लई जाना, सब ने इत्थों हथ खड़े करके इस गल दा हुंगारा भरिया। सो मैं 5 नाम वो लैण जा रही हाँ जिन्हां दा जिथे उद्घाटन दे विच उन्हां नूं इत्थों पास दिते जाणगे इस मंच तों, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ रूबरू ਹੁਣ हो रहे ने। सब तो पहला बीबी सुरजीत कौर जी, पत्नी सरदार जगरूप सिंह जी मंच वाल अगे वधे पे ने। पता नहीं कदों दियां मन दियां तमन्नावां सी। और उन्हां दे नाल बीबी गुरजीत कौर जी, धर्म पत्नी सरदार मुख्तियार सिंह जी, साडे मुख मंत्री साहब श्री अरविंद केजरीवाल जी ते सरदार भगवंत सिंह मान जी वालों उन्हां नूं इत्थे पास दे के अज दी इस स्कीम का आगाज किया जाएगा। जोगिंदर कौर जी, बीबी जोगिंदर कौर जी, धर्म पत्नी सरदार जोरा सिंह जी, सरदार गुलजार सिंह जी, पुत्र सरदार काकू सिंह जी, श्रीमती मलकीत कौर पत्नी सरदार गुलजार सिंह जी। पंजा विच परमेश्वर है, पंजा बाबे नानक दा, 5 ही आप ने ते अज पंजा दा पास दे के इत्थे आगाज किया जाना है। इस तो बाद झंडी की रस्म अदा की जाएगी। मुख्यमंत्री साहब इन्हां दे पिंड पुछदे ने और इन्हां नूं सब पता है वो फलाने वाला। अज दे इतिहासक पल जो कैमरे की अख दे विच कैद हो रहे ने। श्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, सरदार भगवंत सिंह मान जी मुख्यमंत्री पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम। अज दा दिन वाकई ही पंजाब दे इतिहास दे विच
सुनहरी अखरां च लिखिया जाण वाला है। बाबे नानक दा लख लख शुकराना कि उन्हां बजुर्गां नूं, उन्हां मातावां, उन्हां भैणां नूं जिहड़े किसी कारण अपने गुरुआं दे तीर्थ स्थानां ते यात्रा नहीं सी कर सके, अज वो यात्रा करन दा उन्हां दा सुपना पूरा हो गया है। सो ज़्यादा समा ना लैंदी होई चंद शब्दां दे नाल जिस महबूब नेता नूं तुसीं एडा विश्वास दे नाल जिताया है, सो ये जिहड़ी सरकार है तुहाडे विश्वास है। आ जिहड़ा हुंगारा है, एक बात नाल तुसीं हुंगारे भर दिंदे हो। चंद अल्फाजां दे नाल मैं मंच ते सद्दा देण लगी हां कि तुसीं आओ किते ढारे च सुरगां दी दात लैके, तुसीं आओ किते ढारे च सुरगां दी दात लैके, तुसीं आओ कदे हरफां च अर्थां दी बात लैके, तुसीं आओ साडे विहड़े च पुन्नियां दी रात बन के, सारे उड़ीकदे ने तुहानू बारात बन के। तुहाडियां जोरदार ताड़ियां दे नाल पंजाब दी आन शान ते पंजाब दा स्वैमान सरदार भगवंत सिंह मान मुख मंत्री पंजाब, ताड़ियां जोरदार हो जाण प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अज बहुत ही मुकद्दस पवित्र दिन है जदों असी श्री गुरु नानक देव जी दा प्रकाश पुरब मना रहे हैं। पूरी दुनिया च वख-वख धर्मां दे वसदे लोग श्री गुरु नानक साहब जी दे इस पवित्र दिहाड़े नूं मना रहे ने। अज दे दिन श्री गुरु नानक साहब उन्होंने अवतार धारिया जदों धरती ते जुल्म वधे हुए सी, पाप वधे हुए सी, तो गुरु साहब ने सच दा होका दिता, उदासियां कीतियां। मैं इत्थे पहुंचे हुए सारे बजुर्ग, नौजवान, वीर, मावां, भैणां, छोटे बच्चे ते पूरी दुनिया दे विच किसी न किसी माध्यम राहीं इस प्रोग्राम नूं देख रहे जिन्ने भी ਕੰਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत ਵੱਡਾ दिन है ਜਦੋਂ गुरु साहब इस धरती ते प्रगट होए। किमें किमें असी साखियां सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चों तो लैके सुनते आ रहे हैं। किमें किमें मलक भागवां ते भाई लालोआं चों फर्क दस्या, किमें किमें सज्जन ठग वर्गियां नूं सुधारिया, किमें किमें पंजियां नाल पहाड़ रुके, किमें किमें उदासियां ते जांदे बाबा मरदाना जी दे नाल बाणी उचरी गई। बहुत वड्डा दिन है साडे लई अज। सो अज दे दिन बहुत सारे लोग किसी ना किसी नवे काम की शुरुआत करते हैं, किसी पवित्र काम की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अज घरां दे विच अखंड पाठ साहब प्रकाश कराए होणगे। बहुत सारे लोगों ने अज बच्चों का, नवे जमे बच्चों का नामकरण किया होगा कि अज करांगे। बड़ा वड्डा दिन है साडे लई कोई पुण्य का काम करन दा। ते आ जिहड़ी सरकार तुहाडी है, मैं इहनूं तुहाडी सरकार इस करके कहना कि तुसीं चुनी हुई है। आपां सारे रल के ही इन्हां सड़कों के उत्ते दिन रात आपां फिरदे रहे हैं, लोगों दे दर दर जांदे रहे हैं। तो सरकार ने, पंजाब सरकार ने अज दे दिन फैसला किया है कि एक पुण्य का काम करना है कि अज तीर्थ यात्रा का जिहड़ा प्रोग्राम है वो शुरू करना है। अज श्री अकाल तख्त साहब तो पहली गड्डी श्री हजूर साहब जा रहे हैं, नांदेड़ जा रहे हैं। बहुत सारे बुजुर्ग पहला भी गए होंगे, बहुत सारिया बसां जांदियां, बहुत सारे संस्थावां ने जिहड़ियां धार्मिक संस्थावां ने वो तीर्थ यात्रावां कराउंदियां ने। पर फिर भी बहुत सारे इहो जिहे बुजुर्ग हजे भी हैगे ने जिहड़े किसी ना किसी आर्थिक कारण करके या कोई होर
मानवी साधना की कमी होने करके कोई नाल जाण वाला है नहीं, उहदे करके शायद रह जाते होणगे मन च वलवले। सो अज बड़ी खुशी हो रही है मन नूं कि परमात्मा ने कोई ड्यूटी लाई सी, वो पूरी कर रहे हैं। ਉਹਦੇ ਲਈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਲ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। 13 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 1040 ਸਵਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਏਸੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵਿੱਚ सब कुछ मिलूगा। खाना, डॉक्टर बिच है, कोई रब ना करे कोई बीमारी ठमारी रस्ते च हुंदी है, डॉक्टर बिच हैगा ते तुहाडे नाल संपर्क रखा जाऊगा। अज 300 श्रद्धालु जिहड़े ने वो अमृतसर साहब तो 220 तो उपर जलंधर तो ते 500 तो 500 तो 510 520 धूरी दे इस जंक्शन तो अज हजूर साहब लई रवाना होणगे। धूरी मेरी कर्म भूमि है, नाल ही सतौज सनाम मेरी जन्म भूमि है। बहुत सारे दुनिया च बंदे इहो जिहे हुंदे ने जिन्हां दी कर्म भूमि होर हुंदी है, जन्म भूमि होर हुंदी है। अपनी जन्म भूमि ते आउण नूं तरसदे रहिंदे हो। कई बारी रोजी रोटी देश छुड़ा दिंदी है, वतन छुड़ा दिंदी है। बहुत सारे NRI भरा बाहरले मुल्कां च रहिंदे इस वक्त सुन रहे होणगे। जन्म भूमि यह है, कर्म भूमि किते होर है। आउंदे ने फिर लोहड़ी ते दिवाली ते विसाखी ते आउंदे ने, पर बहुत घट खुशकिस्मत है जे होणगे जिन्हां दी जन्म भूमि भी उही होवे ते कर्म भूमि भी उही होवे। परमात्मा ने मैनू ये किस्मत दित्ती कि मेरी जन्म भूमि दी ही मैनू सेवा करन दा मौका दिता है। ते धूरी वालिओ, तुहाडे लई मैं ना बगाना, तुहाडे लई ना मैं कोई बड्डा, तुहाडे लई तां छोटा वड्डा भरा, तुहाडा पुत्त भतीजा। माता जी घनौर कलां तो आए सी, वो कहंदे पुत्त बहुत धन्यवाद, दर्शना वास्ते भेजता। कल मैनू एक फोन आया जलंधर दे एक पिंड तो, वो परिवार इस ट्रेन च आऊगा। साडे किसी वलंटियर ने गल कराती। वो बजुर्ग सीगा, ओदी पत्नी स्वर्गवास हो गई, ओदी नूंह आ रही है ते ओदी पोती आ रही है नाल, क्योंकि बजुर्ग बीमार है, दवाई दुई देण नूं फिर नाल परिवार हैगा। तो कहंदा मान साहब भावें जान सारी सवास ले ले रब वापस, भावें जान सार जान निकल जे, पर आ जिहड़ा तुसीं मैनू उत्थे भेजण दा प्रोग्राम करता, मेरा जन्म सफल हो गया। मैं कहा जी ये मेरे करके नहीं, ये परमात्मा करके है। असीं तां एक जरिया, असीं तां छोटा जिहा एक जरिया बने आ। ये तीर्थ यात्रा दे बारे थोड़ा जिहा मैं तुहानूं हिस्टरी दस दिना। ये दिल्ली दे विच शुरू कीती सी आम आदमी पार्टी वालों श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, क्योंकि दिल्ली तो ट्रेनां चलदियां ने, सो उत्थे ज़्यादा ट्रेनां चलदियां ने। ट्रेनां जांदियां वाराणसी नूं, ट्रेनां जांदियां वृंदावन नूं, ट्रेनां बहुत भर के 1000 बंदा लगभग ट्रेनां दे विच जांदा है। सो असीं भी इत्थों अज वाली जिहड़ी है वो नदेड़ साहब नूं 4 ट्रेनां जाणगियां, कुछ धूरी तो बाया नाभा हुंदे होए शंभू विच दी उधर दी जाणगियां, कुछ इत्थों दी जाणगियां। 3 ट्रेनां वृंदावन, 3 ट्रेनां वाराणसी, फिर एक ट्रेन मलेरकोटले तो अजमेर शरीफ, फिर पटना साहब। ये जड़ियां ट्रेनां होणगियां, क्योंकि अपनियां ने जिथे मर्जी उन्होंने रोक लीए, जिथे मर्जी उन्होंने चला लीए। इस तरह ही एसी बसां भी होणगियां जड़ियां तख्त श्री दमदमा साहब लैके जाणगियां, तख्त श्री केसगढ़ साहब लैके जाणगियां, अकाल तख्त साहब के दर्शन कराउणगे, फतेहगढ़ साहब दर्शन होणगे, दुख निवारण साहब पटियाला,
वैष्णो देवी माता जी के दर्शन, माता नैना देवी जी, ज्वाला माता ज्वाला जी, बगला मुखी, सालासर, चिंतपुरनी, जिथे जिथे भी जिहदा मन करदा जाण नूं, कोई इहदे विच फार्म च असीं इह नहीं लिखदे क्यों चले हो जां कौन हो जां जात पात, क्योंकि उस गुरु के नां ते अज शुरू करन लग्या जिन्हें जात पात खत्म कीती सी, जिन्हें कहा सी मानस की जात सब एको पहचान वो। सो जिथे तुहाडे नाल तुहाडे बच्चे जाना चाहुंदे ने जाओ, एक ट्रेन च नहीं बस च मौका मिले अगली चल जाओ, सो उत्थे जाके रहना, उत्थे रहन दा भी बहुत वधिया प्रबंध आ। हुण जिहड़ी ट्रेन जाऊगी उत्थे बसां दा प्रबंध है, उत्थे शानदार बसां जिहड़ियां ने तुहानूं सारे गुरु घर साहब दिखाउणगियां। हजूर साहब दे जिन्ने भी बाहर जाके थोड़े जे शहर तो बाहर जाके भी गुरुद्वारा साहब ने वो सारे दे दर्शन कराउणगियां ते तुहानूं रहण वास्ते भी बहुत शानदार होटल उत्थे कि बुक कीते जाणगे, कमरे बुक कीते जाणगे ते ताकि तुहानूं ये लगे कि हाँ परमात्मा ने एक मौका दिता दर्शन करन दा, तो उस तुसीं वो मौका जिहड़ा है वो तुहाडे हिस्से आवे। साडी भी यही मंशा है, साडी भी यही मंशा है कि क्योंकि पंजाबी हाँ, साडियां बहुत सारियां भावनावां जुड़ियां हुई ने और असीं इकट्ठे रहने आ। असीं बहुत सारे धर्म जिहड़े पंजाब दे विच ने, असीं एक दूजे दे तिहार मनाउने आ, असीं एक दूजे दे गुरपुरब मनाउने आ, असीं एक दूजे दे दिवालियां दशहरियां च शामिल होने, खुशियां च शामिल होने। मैं बहुत बारी कहा, मैं अज भी कह दिना कि पंजाब की धरती इन्नी जरखेज है, पंजाब की धरती इन्नी उपजाऊ है, जो भी बीजना होवे बीज सुट दो उग जूगा, पर नफरत का बीज पंजाब की धरती ते उग नहीं सकता। सानू आपस दे विच नहीं कोई लड़ा सकता, असी आपस दे विच भाईचारे नाल रहने। सो इस करके अज नाल दी नाल एक होर स्कीम शुरू हो रही है, आटा दाल स्कीम। वो भी घर घर जाके, वो भी तुहानू फोन करके पुछ के, कोई बंदा दिहाड़ी ते गया होया है, उधरों आटा दाल वाली गड्डी लंघ गई, वो फिर कित्थों लभूगा? असी पुछांगे कि जी किन्ने बजे आइए घरे, जे तुसीं कहोगे जी 6 बजे दिहाड़ी तो आना मैं, 6:30 आ जाओ, 6:30 आके तुहाडे घरे आटा दाल जिहड़े है वो आके फड़ा के जाणगे। और आटा दाल की क्वालिटी उही होगी जिहड़ी बड़े बड़े मंत्री जां जिहड़ी साडे घरे रोटी पकदी आटा इहो जिहा होऊगा। ये पहलां वालियां वांगू सुसरियां वाला जां गली सड़ी कणक जां कोई वो नहीं होऊगा कि असीं मानवता नूं जिहड़ा वो कोई मजाक हो जां मजाक करिए, वो नहीं होऊगा। सो इस करके अज तुहाडे कोले आए हैं, श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो दस्सिया कि असीं इस दिन शुरुआत करना चाहुंदे हां, तो उन्होंने कहा मैं भी आउणा चाहुंदा, मैं उस धरती नूं नतमस्तक होना चाहुंदा जिथों गुरु नानक साहब ने 20 रुपया का लंगर शुरू किया सी ते अज तक वो लंगर चली जाता है, वो मुकना नहीं, वो जुगो जुग चलूगा, वो लंगर नहीं मुकना। सो साडे अज दे इस प्रोग्राम च मैं देखा बहुत सारिया बसां हजे आई जांदियां, तुहाडा प्यार ही इन्ना है। और धूरी वाले हो तुसीं तां, वैसे मैं तुहानूं पहलां भी कहा सी कि धूरी जिहड़ा है वो पंजाब की राजनीति की धुरी बनूगा, धुरी धुरी दे आले दुआले घूमदा हुंदा ना सारा कुछ। सो तुसीं धुरी हो, जे एक दलौंकड़ कट ली एक धद्दे नूं औंकड़ ला दी कली तां धुरी बन जांदा है। सो तुसीं धुरी, एक बारी जोरदार ताड़ियां अपने आप दे नां ते भी। अज मैं बहुता कोई राजनीतिक नहीं गल्लां करनियां, वो आपां उन्हां दा काम नवेड़ चुके हैं। वो 1 तरीक नूं आए ही नहीं उत्थे, हुण जदों भी सवाल करते हैं लोग कहते उत्थे क्यों नहीं गए। सो उन्हां दा काम तां निबड़ गया, मैं टाइम खराब करनी उन्हां बारे गलबात करनी। पिछले दिन ही सानू अपनी संविधानिक जिम्मेवारियां निभाउण च थोड़ी जी दिक्कत आई। असीं मानयोग सुप्रीम कोर्ट गए, मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हक च सुनाया कि लोकां दे चुने हुए जिहड़े नुमाइंदे ने ਉਹੀ फैसले लैणगे। ते कल नूं 28 तरीक नूं सरद रुੱਤ ਦਾ अपना विधान सभा का सैशन है, लाइव सैशन होगा, जरूर देखियो। तुहाडे चुने हुए बंदे उत्थे जाके तुहाडे सवाल करते हैं, तुहाडियां मुश्किलों नूं उठाउंदे आ या नहीं, जरूर देखियो। क्योंकि यही लोकतंत्र है कि जिहड़े लखां लोकां ने लाइनां 'च खड़ के चुने ने, उन्हां नूं मौका मिलना चाहिए बोलण दा, ते बोलण दा
अपने हल्के बारे, अपने इलाके बारे, मुश्किलों बारे। सो उत्थे सारा कुछ रिकॉर्ड ते जांदा है। इस करके सारे मैं जिन्ने भी दुनिया भर के लोग मेरे को फोन आते रहते, कहते जी ट्रक रोक के असी विधान सभा का सैशन सुनने लग गए, क्योंकि पहला तो लाइव आता नहीं सी, आपां नूं पता ही नहीं सी अंदर की करी जाते हैं। हुण सारा कुछ लाइव है। तो पिछे जे प्रताप सिंह बाजवा भी हाई कोर्ट जा बड़े, कहते जी जो लाइव हुंदा कैमरा मेरे मूँह ते नहीं मारते, मैनूं दिखाउंदे नहीं। तो मानयोग हाई कोर्ट कहती इहो जिहा किहड़ा काम रह गया जिहड़ा तेरा दिखाया नहीं, इहो जिहा किहड़ा काम करता था जिहड़ा दिखाया नहीं। मैं असीं कहा साडे वकील नूं मैं भी कहा, मैं कहा जी कदे इन्हां नूं कि खड़दे तां है नहीं, जो मैं आउणा 2 मिनटां च मुर्दाबाद जां जिंदाबाद जां करके बाहर चले जाते। हुण खाली कुर्सियां दिखाई जाइए उत्थे, जे कुछ बोलोगे ताइयों दिखावांगे, कुछ बोलो तो सही, पर बोलन किवें? बोलण नूं है ही कुछ नहीं, बोलण नूं है ही कख नहीं। सो नौकरियां बारे बोलणगे। आ 37,768 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा, और नौकरियां थोड़े पिंडां च भी मिलियां होणगियां। बहुत सारे थोड़े धीआं पुत्त पटवारी लगे होणगे, कोई SDO बनया होऊगा, कोई सब इंस्पैक्टर बनया होऊगा। पिंडां दे विच हुण नौकरियां दा मुकाबला चल पिया कि थोड़े पिंड किन्ने मुलाजम हो गए, साडे पिंड किन्ने मुलाजम हो गए, आ मुकाबले चल पे। और 2,98,000 के नज़दीक करीब प्राइवेट सैक्टर के नौकरियां पैदा हो रही ने। हुण तक लगभग 58,000 करोड़ दियां कंपनियां जिहड़ियां ने वो इत्थे आ गईयां। टाटा स्टील आ गई, वड्डियां वड्डियां कंपनियां जिहड़ियां 2 जर्मनी दियां कंपनियां ने, 2 हॉलैंड दियां कंपनियां ने, विदेशी कंपनियां इत्थे आ रही ने। उत्थे अपने धीआं पुत्तां नूं काम मिलूगा और डिग्री मुताबक काम मिलूगा जिहड़ी उन्हां कोल डिग्री है। और जिहड़ियां भी नौकरियां मिलियां ने, एक बंदा हथ खड़ा करके दस दो कि साडे पिंड एक कुड़ी नूं नौकरी मिल गई, ਉਹਦੇ बापू तो इन्ने पैसे ले ले, ਜਾਂ ਉਹਦੇ भाई ने इन्नी ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਤਾਂ नौकरी मिली है। ਅਸੀਂ नंबर ਜਦੋਂ आ गए ना पेपरां 'ਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ नहीं देखते कि ਇਹਦਾ बापू की काम करता है ਜਾਂ ਇਹਦਾ बापू ਕਿਹੜੀ पार्टी 'ਚ है। ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ कि मैनू दस्यो ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। मैं ਕਿਹਾ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦਰਿਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, 664 ਬਣ ਗਏ, 100 ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਣੀ ਜਾਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਬਣੀ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਗੇ ਖੁੱਲਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜੇ ਬਚਾਉਣੇ ਹੈ। ਹਵਾ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਇਹ ਦਰਜੇ ਬਚਾਉਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5-5, 6-6 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਤੇ, 12-12, 14-14 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਕੀ ਨਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕਾਰਡ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਪਿਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਜਰਬਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਕੰਘਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੰਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੰਘੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਲਮੰਦ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕੰਘਾ ਉਦੋਂ ਲੈ ਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾੜ ਹੋਣ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਚੱਕਿਆ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਜਰਬਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਵੀ, ਤੇਲੰਗਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਟੋਬੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਸ ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੇ 'ਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 3-3 4-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 3-4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸ ਜੇ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਰੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਰਹੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਵਕੀਲ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਵਕੀਲ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਜੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੋਢਾ ਫੜ ਕੇ, ਭਾਈ ਐਂ ਕਰ ਲਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਆਪਣੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਸੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਾਲਜ ਬਰਡਵਾਲ, ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਡੀਕ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 14 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, 19 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, 22 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਧੂਰੀ, ਸੁਨਾਮ, ਦਿੜਬਾ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਭਦੌੜ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕਦੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਚਿੱਠੇ ਪਏ ਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੇਚਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਟ ਕੇ ਪੀਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੋ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਨਕਲਾਬ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ, ਧੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉੱਚੀ, ਇਨਕਲਾਬ, ਇਨਕਲਾਬ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇੰਨੀ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ
श्री अरविंद केजरीवाल जी ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पेश करना चाहूंगा उस व्यक्ति ਨੂੰ जिन्हें देश की राजनीति की दिशा ते दशा बदल के रखती ते ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਿਖਾਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲਾਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे, बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज यहाँ पे दूर दूर से आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। आज बहुत पवित्र दिन है। श्री गुरु नानक जी महाराज का प्रकाश पर्व है। दिल्ली की भी और पंजाब की भी आम आदमी पार्टी की सरकारें श्री गुरु महाराज जी के संदेश और उनकी वाणी के हिसाब से हम लोग अपनी सरकारें चला रहे हैं। सबसे बड़ा संदेश श्री गुरु जी महाराज का था कि हमें दीन दुखियों की सेवा करनी है, दीन दुखियों के काम आना है। उसी संदेश को लेके हम लोग अपनी सरकारें चला रहे हैं। और आज का दिन बहुत पवित्र है। इस पवित्र दिन मुझे बेहद खुशी है कि पंजाब के अंदर एक बहुत ही शानदार और पवित्र स्कीम की शुरुआत की जा रही है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। इस योजना के तहत जो बुजुर्ग लोग हैं, उन बुजुर्ग लोगों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। अलग अलग तीर्थ स्थानों पे लेके जाएंगे। आने का, जाने का, रहने का, खाने का, पीने का सारा खर्चा सरकार देगी। जैसा भी मान साहब ने बताया, हर हफ्ते कई ट्रेन जाएंगी। जैसे आज श्री हजूर साहब जा रही है ट्रेन, इसके अलावा श्री हजूर साहब जाया करेंगी, श्री पटना साहब जाएंगी, वाराणसी जाएंगी, मथुरा जाएगी, वृंदावन जाएगी, अजमेर शरीफ जाएंगी। इसके अलावा बसें भी जाया करेंगी, एसी बसें जाएंगी। श्री अमृतसर साहब, श्री आनंदपुर साहब, श्री दमदमा साहब, माता वैष्णो देवी, माता ज्वाला जी, माता चिंतपूर्णी, माता नैना देवी, खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी धाम, इन सब जगह बसें जाया करेंगी। मैं मन में सोच रहा था, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। इन 75 साल में एक भी सरकार आज तक ऐसी नहीं आई जिसने लोगों को तीर्थ यात्रा करवाई हो इस तरह से, और वो भी मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाई हो। भारत आजाद होने के बाद सबसे पहले दिल्ली के अंदर इस योजना की शुरुआत की गई कुछ साल पहले। अभी तक हम 80,000 लोगों को, दिल्ली में 80,000 लोगों को हम तीर्थ यात्रा करा चुके हैं। और मुझे बेहद खुशी है
कि आज इस पवित्र स्कीम की शुरुआत पंजाब के अंदर की जा रही है। आज अमृतसर, श्री अमृतसर साहब से शुरू होके श्री हजूर साहब तक ये यात्रा जाएगी। अमृतसर से करीब 300 यात्री, जालंधर से करीब 200 यात्री और धुरी से करीब 500 यात्री इस ट्रेन से यात्रा करेंगे। अभी तक जितनी सरकारें आई सारा अपना घर भरने में लगी हुई थी। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं था, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा ज्यादा है, लेकिन जो पैसा आज आपकी तीर्थ यात्रा में खर्च हो रहा है, ये सारा पैसा पहले लूटने पाटने में जाता था। वो अपने परिवार भरने में, अपने घर भरने में सारा पैसा खर्च करते थे। अब पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार है और ये ईमानदार सरकार एक एक पैसा आप लोगों के ऊपर, आपकी बिजली के ऊपर, आपकी दवाइयों के ऊपर, आपके बच्चों की शिक्षा के ऊपर, आपकी तीर्थ यात्रा के ऊपर एक एक पैसा खर्च कर रही है। तो जैसे मैंने कहा, श्री गुरुजी महाराज ने संदेश दिया था कि हमें दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। आज पूरे पंजाब के अंदर जगह जगह क्लिनिक खोले जा रहे हैं, आम आदमी क्लिनिक खोले जा रहे हैं। अगर आपके गांव में क्लिनिक नहीं खुला तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत जल्दी आपके पड़ोस के गांव के अंदर भी क्लिनिक खुल जाएगा। आपके घर में अगर कोई बीमार होता है तो हमें तकलीफ होती है, हम नहीं चाहते कि आपके घर के अंदर बिना इलाज के कोई रहे। तो पूरे पंजाब के अंदर कोने कोने में हम क्लिनिक खोल रहे हैं, जहां पे सब लोगों को पूरी इलाज मुफ्त में दिया जाएगा, दवाइयां मुफ्त में दी जाएंगी, टेस्ट सारे मुफ्त में होंगे। उसी तरह से जितने बड़े अस्पताल हैं, सारे बड़े अस्पतालों को ठीक किया जा रहा है और सारे अस्पतालों के अंदर अगर आपको बड़ी बीमारी भी होती है, सारे अस्पतालों में आपका पूरा इलाज मुफ्त किया जाएगा, सारी दवाइयां फ्री होंगी, सारे टेस्ट फ्री होंगे, सारे ऑपरेशन फ्री होंगे। पंजाब के अंदर लगभग 20,000 स्कूल हैं। सारे स्कूलों के अंदर आज कुछ ना कुछ काम चल रहा है। कहीं टॉयलेट ठीक किए जा रहे हैं, कहीं पीने का पानी का इंतजाम किया जा रहा है, कहीं सिक्योरिटी का इंतजाम किया जा रहा है, कहीं दीवार बनाई जा रही है, कहीं क्लासरूम बनाए जा रहे हैं। सारे पंजाब के अंदर सारे स्कूलों में कुछ ना कुछ काम चल रहा है। गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना पुण्य का काम है। गरीब के घर में अगर कोई बीमार हो, उस बीमार को अच्छा इलाज कराना पुण्य का काम है। गरीब लोगों को तीर्थ यात्रा पे ले जाना पुण्य का काम है। ये श्री गुरु महाराज जी की वाणी है, यही उनका संदेश था और उन्हीं के बताए हुए संदेश पे हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। आज लगभग 1000 यात्री इस ट्रेन से श्री हजूर साहब जा रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि लगभग 1 लाख लोग इन 1000 यात्रियों को विदा करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। तो जो पुण्य तीर्थ यात्रा जाने का होता है, वही पुण्य तीर्थ यात्रियों को विदा करने का भी होता है। आज आपकी शुभ यात्रा में आपको विदा करने के लिए मैं खुद भी दिल्ली से आया हूं। आपके इस यात्रा में आप लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए मैं खुद दिल्ली से चल के आया हूं और हजारों की तादाद में, जहां तक मैं देख रहा हूं, लोग यहां पे इकट्ठे हुए हैं। जितने लोग यहां इकट्ठे हुए हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, एक ना एक दिन आपका भी नंबर आएगा, आपको भी तीर्थ यात्रा करा के लाएंगे, आपके घर के बुजुर्गों को भी तीर्थ यात्रा करा के लाएंगे। आप चिंता मत करना। जब तक पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार है, हमारा सपना है कि एक हर एक बंदे को कम से कम एक जगह तीर्थ यात्रा जरूर हम करा के लेके आए हैं। दोस्तों, तीर्थ यात्रा तो कोई भी जा सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी की वजह से उनके पास पैसे नहीं होते, तो तीर्थ यात्रा जाने के उनके पास साधन नहीं होते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अक्सर हमने दिल्ली में देखा, परसों दिल्ली में एक ट्रेन गई है द्वारकाधीश और सोमनाथ मंदिर। उनको मैं, जब भी दिल्ली से कोई ट्रेन जाती है, मैं उनको छोड़ने के लिए जाता हूं, उनको विदा करने के लिए जाता हूं। दिल्ली में लगभग 80% यात्री महिलाएं होती हैं।
महिलाएं क्यों होती हैं? अक्सर आदमी तो फिर भी अपने काम के सिलसिले में इधर उधर घूम आते हैं। महिलाओं की पूरी जिंदगी अपने घर और अपने परिवार को पालने में चली जाती है। महिलाओं को कोई नहीं लेके जाता घुमाने के लिए। जब से ये तीर्थ यात्रा शुरू हुई है, गली की, मोहल्ले की, गांव की सारी औरतें इकट्ठे होके इस तीर्थ यात्रा की ट्रेन के बहाने तीर्थ यात्रा में गुरुजी महाराज के दर्शन कराती हैं, भगवान के दर्शन कराती हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, बच्चों के पास टाइम नहीं है, तो माँ बाप को कहीं नहीं लेके जाते घुमाने के लिए, तो इसीलिए ये तीर्थ यात्रा की ट्रेन के जरिए वो भी चले जाते हैं। आज के जमाने में कौन अपने माँ बाप को लेके जाता? कोई नहीं लेके जाता। आज आपका बेटा है, भगवंत मान है, पंजाब का मुख्यमंत्री है, आपका बेटा है, जो आपका बेटा बन के आपको जगह जगह तीर्थ यात्रा करवा रहा है। ऊपर वाले की कृपा है कि आप लोगों ने आज एक ईमानदार सरकार बनाई जो आप लोगों के लिए इतने काम कर रही है। हम लोग सत्ता भोगने के लिए नहीं आए, हम लोग आए हैं कि एक मौका दिया आप लोगों ने। जितने दिन भी हम लोग सत्ता पे हैं, जितने दिन भी कुर्सी पे हैं, हमारी कोशिश है कि एक एक पैसा आपकी तरक्की के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए इस्तेमाल हो। हमारी कोशिश है कि जितना टाइम हम लोग हैं, एक एक मिनट हमारा आप लोगों की तरक्की के लिए इस्तेमाल हो। जैसा मैंने कहा कि श्री गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते पे हमारी सरकारें चल रही हैं। कई लोग मेरे से पूछते हैं, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों को हरा दिया, पंजाब में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों को हरा दिया, कैसे हराया? हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, गरीब पार्टी है, ईमानदार लोग हैं, हमारे पास तो चवन्नी नहीं है, हमारे बैंक अकाउंट में भी पैसे नहीं है, कैसे हराया? आप लोगों के आशीर्वाद से हराया। आज जितने लोग तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, सब लोग अपने परिवार के लिए तो आशीर्वाद मांगेंगे, लेकिन अपने मन ही मन में वो भगवंत मान के लिए, अरविंद केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के लिए और पंजाब के लोगों की तरक्की के लिए भी तो आशीर्वाद मांगेंगे। आपके आशीर्वाद के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। जितने लोगों का हम फ्री में इलाज कराते हैं, लाखों करोड़ों लोगों का, वो आशीर्वाद देके जाते हैं। जितने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनके माँ बाप हमें आशीर्वाद देके जाते हैं। जितने बच्चों का हम लोगों ने जिंदगी बना दी, वो हमें आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों के आशीर्वाद की कीमत उन लोगों के लाखों करोड़ों अरबों रुपए से ज्यादा कीमती है। तो बहुत लोग हमसे पूछते हैं, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों को कैसे हराया? इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों को हमने नहीं हराया, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों को आपके आशीर्वाद ने हराया है। दोस्तों, अभी अब जब जाओगे, 6 दिन का मुझे बताया गया रास्ता है, आना जाना, वहां पे रहना, लगभग 3 दिन आप लोग वहां पे रहोगे। आसपास 5 गुरुद्वारे देखने का आप लोगों का प्रोग्राम बनाया गया है। सबसे ज्यादा आपको मजा आएगा, वहां तो जाके देखोगे ही, गुरुजी महाराज जी के अरदास भी करोगे, मत्था भी टेकोगे, लेकिन सबसे ज्यादा मजा आपको ट्रेन में जाने का आएगा। आते जाते रास्ते में आप जो भजन करते हुए जाओगे, कीर्तन करते हुए जाओगे, आपको जिंदगी भर ये यात्रा आपको याद रहेगी। बहुत मजा आएगा आप लोगों को। और अपना ख्याल रखना, ठंड का टाइम है, रास्ते में आप लोगों के लिए डॉक्टर का भी इंतजाम किया है। ये पहली ट्रेन जा रही है, वैसे तो दिल्ली में हम 3-4 साल से इसको चला रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका पूरा ख्याल रखने का इंतजाम किया है। कोई कमी रह जाए आप आके हमें बता देना। अगर कोई कमी रह जाए, पहले मैं माफी मांग लेता हूं आप लोगों से। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन आप हमें आके बताना, कुछ भी कमी होगी तो आने वाली ट्रेन में उन सारी कमियों को हम पूरा करेंगे। आप वहां जाइए, हंसते खेलते जाइए, खुशी खुशी जाइए, आपकी यात्रा सफल हो, आप लोग खूब खुश लौटें। एक ही प्रार्थना है, वहां पे जब आप अपने परिवार के लिए अरदास करोगे, पंजाब की तरक्की के लिए भी अरदास करना, भारत की तरक्की के लिए भी अरदास करना, और अपने सारे पंजाब को रंगला पंजाब बनाने के लिए, तरक्की के लिए, सबके खुशहाली के लिए अरदास करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया केजरीवाल साहब। हुण साडे मुख्य मंत्री साहब साडे जड़े तीर्थ
Whenever I had ice cream or cold water, I would experience a sharp shooting sensation. So I just kept ignoring it. Even my hot chai was giving me the same amount of discomfort. My dentist recommended Sensodyne. So now I can be completely carefree and sip my hot cup of tea. It really works. This is the Guru Nanak, which we are, we look at his portraits these days, which is really not the real Guru Nanak. Why? What? Why? Well, he's a farmer. Would a farmer look like that? That's a very different image we have made. I mean, his hands would be fair and lovely hands. You look at the farmer's hands, they will be very different. The government in 84 had hired a company to do a negative campaign on Sikhs globally. It's called Rediffusion, which became Rediff Mail eventually. As in the same company became Rediff. Yeah, Rediff Mail eventually. Like Rediff.com. Yeah. Story of Guru Gobind Singh, even Sikhs are not ready for. We actually don't know Guru Gobind Singh is what I say to Sikhs. What do we know about him? If I say to you he was a Bihari, most people will be like, what? He's a Bihari, he's not Punjabi. He's born in Patna. Today's episode is immensely powerful, immensely storytelling oriented, and immensely informative. If you've ever wanted to learn about Sikhi, which most people know of as Sikhism, this is the episode. We did a prequel episode about Guru Nanak and the basics of Sikhi. This one is more of a deep dive. If you're Sikh, of course, watch this one till the end. Spread it as much as possible. But if you're Indian in general, even if you're not Sikh, this is the episode you need to watch to understand the historical Sikh perspective and the present Sikh perspective. Considering that this whole Khalistan situation has woken up in the world lately, this is the podcast that people need to watch. All I'll request of you is to share this episode as far and as wide as possible. For more episodes just like this, make sure you follow us on Spotify. We're Spotify exclusive. Every episode's available on Spotify 48 hours before it's available anywhere else in the world. On today's episode, Harinder Singh returns to educate us, to enlighten us, and to take us through the journey of Sikhi on TRS. Arvind Singh, so welcome back to the Ranveer Show for an even deeper conversation on Sikhi. Careful with what you ask for, man. Sometimes deeper gets, it smells too then. I'm just kidding. This is the sequel to last time's episode. So I really thought we'll end up doing a story to actually begin talking about Sikhi on TRS. We didn't do that. We actually spoke about the philosophies of it more. I think we ended the last episode with Guru Nanak Dev Ji's learnings, what the absolute core principles of Sikhs are. I actually want to begin this episode by going back to the story a little bit. And then again, we follow the same pattern where we go tangentially. So we were talking about Kartarpur in the last one. Yeah. And we were talking about succession. Okay. On this episode, we also have to address the Guru Granth Sahib in detail. Yes. Which one would you like to begin at? The succession? Wherever you want to go. Where would you like to go? It's your show. It's for your audience. Let's go with the succession. Sounds good. So at Kartarpur, he's training, right? He's training in this paradigm of what I was calling a Koankar, and then we talked about it. But the words which come out more is, as I was saying, there's a city now. There's a planning. How are you going to institutionalize certain things, which means what is the policy of this area? How do we live, essentially? Today, we call this governance. Today, we call this community building, right? So what is Guru Angad given, the next in line, before Guru Nanak leaves this earth? This is very important. This all happened when he's alive. So it didn't happen after he died, first of all. And it's not his son. So what did he give him? This is directly from Guru Granth Sahib. So things I want to talk about is how do I know all this? Because what Guru Granth Sahib, the world calls it the Sikh scripture. Scripture is not the right word for it, in my opinion, because it's not a native term. We call it Bani. Bani is a voice. Which voice is being carried in there, right? The voice which Guru Nanak is carrying in this is, he says, what was given to Guru Angad, that what was his qualification? He says he was given the divine qualities, Da Gun. So this is very, very important. So what did he transfer? He says he
Because he was possessing the divine qualities, he's been trained in it. Guru Nanak personally trained him. When he gave him the Guruship, he gave him Gyan Khadag. Gyan is not just a knowledge, it is that deeper knowledge, which we call wisdom with a capital W now, right? And then Khadag is a symbolism of the ability to rule. Khadag is sword, that it is authoritative ability. This is the Guru Nanak, which we are, we look at his portraits these days, which is really not the real Guru Nanak. Why? What? Why? Well, he's a farmer. Would a farmer look like that? That's a very different image we have made. I mean, his hands would be fair and lovely hands. You look at the farmer's hands, they will be very different. So we have created this Sant tradition Guru Nanak, whereas the real Guru Nanak is a traveler. Real Guru Nanak is spending time in jail. Real Guru Nanak is farming. Real Guru Nanak is wearing different clothes and eating different things and talking in different languages. That's a different Guru Nanak, which is the real Guru Nanak in Guru Granth Sahib, our source of truth. And I was saying it's not a scripture because it's more like a charter. You have to read the charter and interpret it. It is not a mantra to be repeated only. Expand a little bit on what a charter means, sir. Charter means what are your first principles? Because first principles don't talk about every issues. You have to use those. It's like a constitution to interpret for the reality of today. So like in 2023, if I have a behavioral thing going on, a political scenario or economic issue, what is a solution from this paradigm? So that's a charter. Charters don't cover every issue. They cover the principles which have to be interpreted for your reality in the era you are living in. Okay. So universal rules that actually go past timelines. That's right. Beyond the space of time and era you are in. Exactly. Yeah. Okay. So that's what Guru Angad's getting. So he institutionalizes what? Like Guru Nanak traveled, set up the city. The two major things he did, he develops a new script. Like Gurmukhi script is not Guru Granth Sahib is not Punjabi. Punjabi existed before Guru Nanak. Punjab is a region. Languages are local phenomena. But he develops a script. Now, this is something which people don't understand. Development of a new script everywhere in the world is considered development of a new political unit. Really? Absolutely. Because this is how the knowledges are going to be written and transferred. So Guru Nanak utilizes all the letters of Gurmukhi script, but Guru Angad organizes them and he becomes a teacher. Because he says now knowledge has to be availed, what we call today, availed to the whole open source of knowledge. Because it was not open source. It was very much of a privilege. So Guru Angad develops it and he's teaching you earlier. In the last show, we talked about Sher Shah Suri. He comes one day to see Guru Angad. This is going to be interesting and he's quite upset. Humayun comes to see him. A day after, he loses to Sher Shah Suri. Small context. Babur was the first Mughal emperor. Babur's son was Humayun. He's the second Mughal emperor. Who got ousted by Sher Shah Suri, who was Babur's general, I believe. He was in Babur's army. He becomes his adversary at some point. That's right. Yeah. And then Sher Shah Suri is power hungry, actually becomes a powerful emperor. But then I don't think he has a good successor. Something like that. Okay. Because you see, history is eventually his story, right? So it depends on which version we go by. But we'll say they're adversaries. I don't like to say that it is only that because emperor is a strong word, but he's an adversary, yes. Eventually, Humayun gets the throne back for the That's Mughals. right. And Humayun, in that condition, when he has just lost, actually comes to Guru Angad in a city which he founded called Kadur. It still exists. It's near Amritsar, Kadur Sahib we call it. And he's teaching that day, Guru Angad, near Amritsar on Indian side. That's right. The cities are on both sides of the border because it was Punjab. And he's teaching that day. And Humayun walks in and he gets stopped. He's very upset because, he's a big man. It's like a prime minister walking in and you're not attending to him. He's like, look. And he pulls out his sword. And Guru Angad, he's like, you didn't pull it where you needed to pull it. I'm teaching right now. Just wait. No sign of them yet. भैया हमें चुप कर यार सोचने दे
रोस्टी ना मीठा, हर बाइट में ब्लास्ट. So this level of instruction and communication with emperor and again emperor is another thing. This is part of the Gyan Khadag. The ability to have a conversation and say the truth where you need to say it. That's what Guru is. Guru word, it's a principally speaking. If you look in the Hindustani parampara, as they say in the tradition, it means Gu is darkness and Ru is light. Somebody who is an enlightener, who takes you from the ignorance to enlightenment, including with the emperors. So that's Guru Angad's confrontation as well. So every Guru of the 10 Gurus, if you look at like this, from Guru Nanak, Guru Angad, and eventually to Guru Gobind Singh, it's the same jyot, the same light. The only thing which is, and it's in fact the Sikh paradigm in Guru Granth Sahib says that light was exactly the same, which means wisdom, and method was exactly the same. This might confuse people because we have our own image of what Guru Gobind Singh is and what Guru Nanak is. It says, Jyot Oha Jugat Sai. Jugat is method, how they implemented the vision. Only thing different between the 10 bodies was the body. Kaya change hui hai sirf. What was the method? Exact. So method is how Guru Nanak did dialogue, how Guru Nanak developed institutions, Guru Angad further did it, which means the external manifestation changes. Like some people believe the first 5 gurus were pacifist. This is what books write. And then they write that next 4 became a little militant and Guru Gobind Singh became very militant. Yeah. This is a common thesis. Completely antithetical to Sikh belief. Which is? That all guru was exactly the same. Militancy, physical fight, like wars, is an external manifestation of what's needed at the time. But every single one was prepared. The whole symbolism in Guru Granth Sahib is they all carried Gyan and they all carried Khadag. So we have to understand that. This is why nothing changed from Guru Nanak to Guru Gobind Singh. It's the acclimatization of the time, the needs of the time. You're being shown how to work with it, how to tackle it or address it. Okay. At the start of the last episode, we spoke about the mystical aspects of Sikhs. Would you like to highlight it here as well, especially when we're talking about a wisdom transfer? Absolutely. The mystical element. So even the very names, I like to work with the words themselves, right? So Guru Angad is named Lena. Lena is an asset, literally. That's what it means. And he is so well trained. What is the training in? In the wisdom and the methodology, Jyot and the Jugat. That eventually when he's given the Guruship, he's called Angad. That Guru Nanak is saying, you are of my own body now. So body otherwise is different. So mysticism is what? Mysticism is you can physically understand that this is the next body, but the ability to have the same relationship with the divine, and then within that, out of that relationship, your ability to rule or create methods or the solutions for the community. That's the mystical element. Guru Angad has his own experience of the divine. That's the whole point. And those experiences we can all have, and Guru Angad also had, who otherwise, by the way, earlier did all sorts of things too. This is another thing I want to mention. People think they were perfect beings. No. They were average Joes, as we call them today. They also had trajectories of life which took them all sorts of places. But once they entered into the house of wisdom, in this case, the house of Guru Nanak, they consciously chose to change their lifestyle. And then they got trained in it. Then they experienced it. And from those, one led it. And Guru Angad is that. Okay. Want to expand on his journey? One of them I mentioned was the development of the script, which it's education. Effect of that I want to mention is, in the early 20th century, we don't know this, what people now call Golden Temple, the Harmandir Sahib complex, there's a parkarma, you walk around it, right? On where there's a wide walkway, there used to be classes there. Our gurdwaras used to be learning centers. Now they've become worship centers. They used to be where there was activism. You see some of that, but you see it in a very different way these days. It's more flashy. So this was a place where, and this is what gurus developed, that look, the learning, first one was spiritual center, your connection to the divine. We use the word Simran, that we learn how to be in the remembrance of the one. That's the first reason why we go to Gurdwara.
And the next 4, there are 4 more. Eventual one is that it's a fort. The things which need to be protected, you provide protection, whether it's human, and primarily it's human beings. That's why Gurdwaras used to be safe sanctuaries. What we now call sanctuary cities in America. When the president of America is messing things up, there were few mayors who says, no, come to our cities, we'll protect you. That's what Gurdwaras used to be, including during emergency. I don't know many people know this in India. When there was a period of emergency in mid-70s in this country, 1970s, people of opposition went to Darbar Sahib complex in Amritsar, and they were in sanctuary there. No police or no army went there, knowing very well that even the current Prime Minister of India was inside. Zoho Creator is a low-code application development platform that has helped organizations of different sizes to modernize their IT. Build custom applications for your unique business needs faster using our intuitive drag-and-drop interface. Try Zoho Creator. So this is a very big thing, creating Gurdwara as a safe space where empowerment center for women, Guru Angad did that as well. So what I'm trying to say is the ideas in Guru Granth Sahib are really about becoming a lover of the divine. I'm going to come back to that because they write it as such. They use that word. In fact, I should share that. It says, people talk about who's a lover, and we got our own versions of, from Bollywood to mysticisms to old ghazals. In Guru Granth Sahib, it says, people who make lists of pluses and minuses, they can never be called lovers because lovers live beyond consequences. So think about that for a second. Mostly we are dealing with transactionality, we call it today. The transactions of life, including in the relationships. We have done exactly same when we pursue divinity. Human behavior is, I'll do this prasad or I'll do that if this happens. That's transaction. What we are told is, no, the lover just loves. It is up to the beloved what the beloved does. So this angle is carried by each guru. But as a relationship, because they became the lovers, the ultimate lovers, we must be addressing the realities of the communities we live in. This is why you see such a political activism among Sikhs from day one. That's in the DNA because Guru Nanak did it. Because people don't understand why Sikhs are like this. Well, because that's what we believe in. And we do this to our own leaders. We don't look at whether he's Hindu or a Sikh or a Muslim. We did that to Ranjit Singh too. Because a part of Jurrat jo sikhai hai from Guru Nanak onward, ability to speak the truth when it's needed, not afterwards. And he writes it like that. Guru Nanak has written a Shabad where he says, Sach sunai si sach ki vela. Make sure you speak the truth where it is needed the most at that moment. So that becomes part of our DNA. These are the trainings. So this idea of physical and non-physical or metaphysical, if you want to call it, if you want to be philosophical about it, this is part of the training. And that training idea is in Guru Granth Sahib. We call it Shabad. Shabad is an old Indian Indology word, where it's a combination of word and sound. And what has happened over the years, this is my understanding now, that the knowledge part people are still pursuing. Sound part is the experience part. And because we lack that experience, the wisdom is becoming something else. It is some intellectualization, like PhD, job security stuff going on, rather than experience and the knowledge coming together to bring changes within and for the communities we live in. Said a lot of deep stuff in this one paragraph. Well, you said you wanted something deep in Yeah, this. no. This is great. This is great. Consensus of what you're saying is, again, that element of mysticism and dhyan especially, when it comes back into the younger generation of Sikhs, people will know true Sikhism. That's what I've understood from what you're saying. Something like that. And I don't want to reduce this to Sikhs. I went to a space in Lahore on a Friday at 7 p.m. I was speaking at Punjabi University of Lahore. There's a Punjabi University in Indian side. There's one there because of 47. And I finished my lecture and I realized it was 7 p.m. And I went to this Sangat. They call it Sangat. Muslim leftist Sufis stood together there. I'd read about them in a book, Sayyid Najam Hussain. And I went there that day. They were discussing Bhai Gurdas's Vara, who was an exponent of a theologian and a linguist from the 5th Guru's period.
the one who was a scribe of Guru Granth Sahib. Just like on this side of the border, that side, these borders are, fictitious, as we said, they're constructed. People, it's not just the Sikhs who read these. This was part of the culture of Punjab. It was Sikhs, non-Sikhs, Muslims, tribals, Hindus, Sufis, leftist Sufis included. So my point in sharing this is it's not just the Sikhs. Obviously, the one who claims to be of the Guru, they better understand it, but others also read this. And I don't like to say true Sikhi, because as soon as we start qualifying, something has to be negated then, and this is where the wars are, right? The debates on ideas is this, everyone's claiming they are true. Well, the truth is in the source of truth, which for Sikhs is Guru Granth Sahib. Everything else is debatable. Bit of a rookie question. Yeah. Was the Guru Granth Sahib constantly added upon over the years? Because that's the narrative that a lot of Indians have. Yeah. What's the narrative? Guru Granth Sahib was compiled by Guru Arjan, the fifth in the line of the Gurus. Okay. Every Guru got the Banis, like Guru Nanak's Bani, Guru Angad's Bani, Guru Amar Das, Guru Ram Das, and Guru Arjan is there. And by now, there's a fifth generation of Sikhs. By Bani, you mean learnings of the time, of their They time. are compiled in Shabads, poetry and Rag. Remember, we are too focused on intellectual element, the literary element. But the poetry and Rag is very important, the musical harmony and the poetics, because that's where many things are experienced mystically. You're saying once you chant, what's written in Sing. the Guru? Sikh culture is primarily about singing. Gao. Look, right now there are two of us talking, we're exchanging, but we are not talking at the same time. If we talked at the same time, nothing will be understood. If we change that to singing, and you can make 1,000 people, it will be a powerful experience. But if 1,000 people were talking, it will be a pretty destructive experience. Sikhi, it's very much kirtan and singing. Gao. Because when we sing, we are invoking in the Indologies what we call ras, shringars, or the flavors, emotions, which brings to us a larger experience of our understanding. So Sikh culture is very much about singing. And not in the way we see it these days, it's become something else. Rabindranath Tagore went to the Darbar Sahib complex and he heard there, and he's written about this. He's like, this is a very different music. And he just wanted to keep listening to it. He's never heard anything like it. Until 1970s, the Bollywood directors used to go to the Darbar Sahib complex to listen to the newest thing, which means the tradition was that rich, of kirtan, not this regular kirtan with a 3-key magic business. So that's where it's coming from, because every guru sang. They played the instruments. Can I have a go at this, like in terms of reverse engineering the logic a little bit? Sure. When you watch a movie, the background score plays a huge role. If there's the same scene with the music for a thriller moment, that'll make you feel different. And if the same scene has romantic music, that'll make you feel different. That's right. So what I am assuming is that the words in the Guru Granth Sahib had power, and that power was added upon more by tune, because tune made you feel a certain way as a chanter. And that mixture of the words as well as the emotions as well as the tune actually resulted in a deeper connection to the divine, which was Guru Nanak's original idea. Something like that. Okay. It's something like that. In fact, if I may use a phrase, when Guru Nanak would start to sing, when he'll say Mardanya, who was his companion, who played rabab, one of the string instruments, and he would say, Bani aiye, rabab ched. Look at the word ched. You don't play. It's what we call, when you're just mess around. Masti. Mess around with it's like when you're having a jamming session. I don't want to use word. So chedna, it's got other elements in there. There's a lot of connotation in, it's not you're going to play me. You're going to touch me in a particular way that is going to do certain things. Right? There is that feeling element, passionate element in there. So the music does that. And playing a particular music, I can get into that. The old Hindustani tradition of Margi Sangeet, as they call it, used to be all about singing Drupad, which barely 2 or 3 exponents are left now. What is Drupad? Exactly, right?
because now we don't get to hear it. And then we wonder how come the fact's not, because every music has its own, not just genre, but Emotion. there's a purpose of invoking it. Right? Okay. Like if I'm listening to Public Enemy, I know what I'm going to get from Chuck D. If I'm listening to Phil Collins, I know what I'm going to get. But if I'm listening to Dagger Brothers, I know what I'm going to get. If I'm listening to Bhimsen Joshi, I know I'm going to get incredible techniques. If I'm listening to Bade Ghulam Ali Khan Sahab, I know he's going to make me cry. Right? So there's an invocation. So Drupad had something of that nature, which now has become rare. Now even the dhamars we hear have become something else now. Dhamar was incredible because they invoked the emotion where the whole vibrations, as we call them now, thar-tharad hai na jo. Now it's semi-romantic, if I may call it that. Earlier it used to be romance, but a much more fulfilling one and transcending it to divine romance. Okay. Now I'll have to pull you back to the story, sir. That's kind of an anchor through these 2 episodes. What would you like to say about Guru Angad's life? So we were on Guru Arjan, right? How Guru Granth Sahib came. What are different versions? Do you want to skip the 3rd and 4th Gurus? No. I mean, we can get into it, but I can combine it in here. Okay, sure. So the way Guru Granth Sahib came, as we were talking about, it's collection. What Guru Nanak gave to Guru Angad, they gave him Bani. They gave him Gyan and Khadag, remember? Methodology and wisdom. And wisdom is in the Bani. Bani is the voice, which is a collection of shabads, So that was given to Guru Angad. Guru Angad gave to Guru Amar Das. Guru Amar Das gave to Guru Ram Das. And Guru Ram Das, by the time Guru Arjan came, he's 18 years old. Of course, we can't discuss everything, but I want to mention 18-year-old. He has 2 elder brothers who don't get the Guruship. You can see what it does even in today's scenario in Hindustan Parampara, right? One is renunciate, the other collaborates with the state of the time too much. He's an 18-year-old. He's the one who looks at that now distortion is occurring. People are writing shabads, they add the word Nanak in there. It happens even today. He's like, how are we going to know what is the source of truth? So he designs an ingenious system of compiling this. Guru Arjan is the one then who put together what we now call Guru Granth Sahib. There are only 2 versions. First is his. Everything available to him till his Bani, all the, what I called earlier, the radical Bhagats, 15 of them, bards, they're called Pat, the court poets in the courts of the Gurus, 11 of them, and then 3 Sikhs who recorded certain things in the Guru period. He takes all of them and compiles them, and it was called Ad Granth at the time. And then the second version is what Guru Gobind Singh put together, which includes the Banis of the 9th Guru, Guru Tegh Bahadur. So there are only 2. The rest is all confusion. Okay. And there are only 2 authenticated, first by Guru Arjan, that this is the only authentic. Are there alternative ones? Absolutely. The descendants who are biological descendants who didn't get the Guruship, they like to claim they're other ones. But they have never been accepted by Sikhs because we believe what Guru said is the right one. And we only focus on that. Okay. I want you to paint a bit of a historical, contextual picture of the time. I'm assuming that at the time of the 2nd, 3rd, 4th, and 5th Guru, we're talking also about the time the Mughal Empire was growing and ruling Hindustan. Absolutely. So the 3rd Guru is the Akbar's time. 3rd and 4th Guru. So the ages are different because 3rd Guru is very old as well. In fact, he's the oldest Guru from an age. They're all destroying stereotypes, as I said earlier, right? And one of the stereotypes he destroys is, in his 60s, he changes his lifestyle. And he eventually gets the Guruship. There are many other people because the criteria is same. The people who have become like the divine in their behaviors, not just in their vocalizations, right? He's the one who organized the Sikhs in 22 manjis, it's called, because the Mughal Empire at the time had 22 regions. And this may shock people. 3 of the heads of those missions, as we call them today, were women. The oldest man as a guru, because old people don't change their habits, that's why I'm saying this, he actually appoints the head of Kabul mission, the Kabul Manji, as a woman. And you know how women in Afghanistan even today are treated. This is mandate. You don't say they're equal. You don't say we should do that. Should is preaching. You just do it.
And you do it that if you want to talk to me, she's my emissary, you better talk to her. Figure out how to talk to her. You may not agree with it, but she is our emissary. You better figure out how to talk to her. That's what Guru Amar Das did. So Guru Arjan, the one who brought together, by the way, the fourth Guru is the poorest Guru. Third Guru was the richest Guru. The fourth Guru, you're from Amritsar, I just learned. Maybe you recall sometimes, they give you other than prasad, chole hote hain saath mein. That's in the memory of Guru Ram Das, because as a kid, he was a very poor kid. He used to sell those to make his living. Now think about this. The richest Guru is marrying his daughter to somebody who's that poor, because the criteria was not how rich somebody is in terms of wealth or money assets, the richness of qualities. This is how stereotypes are being destroyed. That's why among Sikhs, lot of this principally is very clear. In practice, people are not able to do it many a time. Can you give a little historical context on how the belief system was spreading? Like what was happening, especially with respect to the Mughal Empire, as well as the local kings of the time? I'm sure there was some kind of religious debates, religious persecution of some form. From both sides, by the way. From the predecessor, for example, the Hindu and Islamic ideas, like both culture, the Muslim ideas, the religious leaders are not very happy with the gurus because there's a lot of disruption. The Qazis and the Brahmins are not happy because you're treating way beyond the ideas of equality of the time. Right? From a caste perspective, from the women perspective. I mean, it's very when anyone's power is being taken away, it's a hegemonic culture is being destroyed. That's what we call it today. And that's why there are issues. So there were issues. I mean, 6 out of the 10 gurus, just to put a number on it, to make it so clear, and because we don't understand these things, 6 out of the 10 gurus either spent time in jail, they were targets of political assassination, or martyred with torture. Guru Arjan, we just talked about, right? His 2 biggest contributions are Guru Granth Sahib and what we call Golden Temple today, Harmandir Sahib complex. Because one disrupted the thought that it's available to everyone. He wrote that. He says, all the wisdom I had gathered, I'm openly presenting to the world. Pyo Dade da khol dittha khajana. Pyo Dada are ancestral. Ancestor here are not biological. They are guruships, the ones who carried the wisdom. He's like, I am openly now making it available to everyone. Obviously, the Muslim and the Hindu priests didn't like that, or the Qazis. It wasn't open previously? No. It was because remember, even today, religiosity is so exclusive. People say it can only be given to particular people in a particular way at a particular time. So anyone who took up Sikhi, it was presented. And non-Sikhs. No, I mean before Guru Arjan. No, Guru Nanak is already doing it. Now, look, Guru Nanak traveled and the Shabad was available. So one of the things, this is a great question. In Sikhi, the personality is not central, Shabad is. We appreciate Guru Nanak and call him honorifically Guru Nanak. But according to Guru Nanak himself, the Guru is always the Sabad. What we call Shabad now used to be Sabad, old language. The word. The wisdom itself, the eternal wisdom. So that has always been central in Sikhi. That's why you'll see Guru Granth Sahib, the reverence Sikhs give is at a very next level. It is not just a religious book for us, because we believe that's central to us. And not just us, to the world. The wisdom is central. And Guru Arjan, because he created a center to house that wisdom too, that's the Golden Temple complex. Now, and everyone's allowed. So people in Asia were not used to that. Anyone can come and have access to it. These 2 were the reasons why he was tortured to death. Want to talk about that? I want to just address the Golden Temple first. Okay. That is the image of Sikhi for a lot of people all over the world. I won't just say Indians. Oh, it's global image, yes. For an 11-year-old watching this show, how would you explain its significance? Great. This is... Firstly, I'm going to take out the word golden. In the Guru period of the 10 Gurus, it was never golden. Maharaja Ranjit Singh made it golden. So, the glitter part was never part of the Sikh tradition.
it became when they became rulers. Ranjit Singh was a Maharaja of Punjab, right? Which has its own right. It's a great story. But in the Guru period, it was never golden. It is, architecture is very, very important. 4 doors, which means open to all 4 people from all 4 corners. Doesn't matter which caste, which background, which religion. And anyone who comes, he has to walk down. There is only way to enter a shrine is being humble. Going down is that. And doesn't matter which entrance you came in from, there's only one way to go to divinity. So surrounding the pool, the sarovar as we call it, there's only one pathway which goes to Harimandar Sahab. Hari Mandar. Hari, in Indic tradition, including in Sikh tradition, is the word which is, Hari can mean all pervasive. I'm going to go to etymology now. Sure. Hari means all pervasive. Hari is not just a Vishnu's avatar, that's the name. Many, like my name is Hari, and that doesn't mean I'm. What does the word mean? It's the most oft repeated word in Guru Granth Sahib. That's why it's called Hari Mandar. Anything which is physical will be something less. So what is the idea first, right? It's a building at the end of the day. But what's the idea behind the building? So when you see it, idea behind the building is, here is one manifestation of all pervasive force. That's what Hari means. Hari also means the one who eliminates your fear. So if you want to eliminate fear, let's read what's housed in this building, right? Which is what I talked about earlier. Hari, so Hari is something green, something which grows you, something which blossoms. And our ideas for that are housed here in this building in Harmandir Sahib complex. That's what should be coming out. Right now, it's become a selfie thing, which I get it because of the glitter. And everyone respected it, that's why. Even when they tortured Guru Arjan to death, they dare not attack it or dare not say ki take out Guru Granth Sahib because it includes elements of Baba Farid, who comes from Islamic tradition. And this is very disruptive. Just let me put it blanketly where people understand. It has shabads of Brahman. It also has shabads of butcher. Think about that for a second. This is how disruptive it was. People didn't know how to deal because they're like, it doesn't matter what your background is. If you have experienced Ikko Onkar, the one, then we must learn from them. Doesn't matter what they wear, doesn't matter what they eat, doesn't matter what religion they come from, doesn't matter what language is utilized by them. It's the experience we identify because that experience is so intimate, so personal, so divine. That's Guru Granth Sahib housed in Harmandir Sahib complex. Okay. And for people who've not been there, would you like to relay something about what you experienced there? Well, it's emotional experience for most people who visit there. Doesn't matter what background they are. For many, it's a historical thing because the history of that complex is very unique. Not just the construction and what I just talked about, the idea, but throughout history, it's been destroyed many times as well. And it's rebuilt many times as well. In fact, there is a Sikh author from Delhi, who's died now, Sardar Patwant Singh. I'm going to quote him. He did a book on Golden Temple with Raghu Rai, a celebrated photographer of India. So I'm just giving that reference if people want to check it out. And he has written this phrase here about what this place is. And the phrase he used is, it took the blood and sweat of many generations to build it, to defend it, and to rebuild it. It is not a sacred place for us. We don't have Sikhi doesn't have an idea of sacred space. We believe every place is sacred. It's a historical place where we gather and we learn that vision and implement that vision. So when you look at that visual, sometimes you don't know what to do, politically speaking. That's what this place is. It's that complex, which has multiple gurdwaras actually. You've probably seen there are a couple of long watchtowers. There used to be hundreds of them until the early 20th century. Because every group thought, the Sikh groups included, we should play our role to protect this area. It's that good. They were called bungas, the watchtowers. Not of the government, not of the Sikhs, of people from various biradaris or groups who said, we want to play a role in protecting. It's so good. The wisdom in there. Yeah, I think the context I gained is that it's a historical symbol.
Fair to say? Not symbols. Symbols are transferable, so I have to be careful with the words. You can say, draw it on a piece of paper and put it in your pocket. That's a symbol. It's a manifestation of that idea, which is living reality. This is why, there was a move to make the Golden Temple complex a UNESCO site. Many Sikhs who understand this vehemently opposed it. UNESCO sites are not lived realities. They're in the past. They're being just protected. This is a lived, functional space. It must be understood as such. It is part of the Sikh DNA that don't tell us what to do with it. We have never listened to anyone who's told us. None of the gurus did. This is our space. We will do what we need to do here. What do you mean never listen to anyone who has told you? Why would someone tell the Sikhs? Anyone who, including, because Sikhs DNA, I said, is like a spiritual political DNA. And spiritual and political leaders always want to be controlling, whether they look like Sikhs or whether they don't look like Sikhs. So they want to control the thought process which is emanated from there. Because it's opposition for them technically. That's right. Like in the British period, people don't know, the Sikh activism in early 20th century was even the Gurdwaras were run by British. Okay. Yes. They assigned managers at each Gurdwara because they knew, including Darbar Sahib complex, Golden Temple complex. This is going to shock you. They had their own Jathedar who actually brought General Dwyer, the guy who gave orders for Jallianwala attack, and gave him Saropa, which means acknowledged him, recognized him. Can you imagine that? Because it was appointed by the British. So Sikhs decided in early 20th century, we're going to free our Gurdwaras. This will be a test run on how to free South Asia. And they did. They got Golden Temple complex back. They got Nankana Sahib, where Guru Nanak was born, back. And once they freed enough Gurdwaras, it's actually called Gurdwara Reform Movement, which means taking the Gurdwaras back into Sikh control instead of the government control. That's when Gandhi, that thing which you may not know, he went to Nankana Sahib and he sent a telegram. The first battle of Indian independence has been won because no native anywhere in South Asia was able to free their places. Then came the political movement from Punjab. If you look at the statistics of Indian independence, people who died, people who sent to life imprisonment, Kala Pani ki saja as they call it, people who were hanged, 60% hanged are Sikhs, 2% of the population. This is the DNA. 80% of the people sent to life imprisonment, Andaman, Nicobar or Singapore, Sikhs. So this is where political activism is born from Shabad. You can paint whatever picture you want. We are listening to our ideology from the Guru, which believes in freeing things. So first they freed the Gurdwaras. Then they worked towards, so whether you were Bhagat Singhs of the time, whether you were Ranveer Singhs of the time, and Bhagat Singh otherwise said, I'm an atheist. But if you read his articles, he says everything I've learned is from a grandfather. And these Babbar Akalis who are fighting right now and hanged by the British, it is because of what they have done. And it was during Holi, so let me invoke it. Holi is coming, right now. On the Holi day, Bhagat Singh wrote this editorial in the Hindi paper. If India ever becomes free, it will be because what Babbar Akalis are doing in Punjab fighting the British, and he writes that editorial. So this is what I'm saying is early 20th century. This is not far distant. We don't even tell these narratives right now. Yeah. Which is why, honestly, there is a change in the internet narrative where a lot of young Indians are feeling a lot of gratitude towards the Sikh community for the protection, honestly, that the Sikh community has given the rest of India and for the sense of warriorship.